Hello students, so let's start with today's biology class. In the previous session we have finished with kingdom Protista and today we are going to start with kingdom Fungi, that is the third kingdom of 5 kingdom system of classification. So as we have discussed already, as we move from kingdom Monera to Protista, Protista to Fungi, then Plantae, then Animalia, there will be some changes, or you can say the complexity will be increased as we move towards the kingdom Animalia. As we have discussed in Monera, they were the simple prokaryotic organisms because they were the simplest one. In Protista, we have studied unicellular eukaryotes. They were eukaryotes but they were unicellular. Okay. Now the next kingdom, kingdom Fungi, we have multicellular eukaryotes. Means because you know after this you all will be eukaryotic but they are multicellular eukaryotic. They are complex than Protista but less than Plantae. Okay. The most important point in the kingdom Fungi, the organisms included in the kingdom Fungi. So fungi is the plural term and fungus is the singular term. Fungus if we are talking about a single organism and fungi if we are talking about the whole group. Okay. So the most important point is they show heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition means they cannot prepare their food at all. Means in the previous kingdoms like in Monera and Protista we have studied, in the Moneran they were be photosynthetic, chemoautotrophic, and Protista also we have studied about photosynthetic Protistan, but this group is totally heterotrophic. So they are also acting as a primitive organisms of Animalia because animals are also completely heterotrophic. तो इनको हमने एनिमल्स में भी नहीं रख सकते थे, अगर ये कम्प्लीटली हेटरोट्रॉफिक थे तो इनको एनिमल ग्रुप में भी रखा जा सकता था, लेकिन नहीं, इसमें बहुत से फीचर्स ऐसे हैं जो एनिमल्स में नहीं है और एनिमल्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं इनसे, इसलिए हमने इनका एक अलग से ग्रुप बना दिया. ओके, सो दे आर हेटरोट्रॉफिक इन विच दे कैन शो 3 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन: सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक. सेप्रोफिटिक when they feed upon other dead organic matter, parasitic when they live inside the body of other organism, and symbiotic is the mutual relationship between two organisms in which we are going to study about lichens and mycorrhiza. तो इसमें 2 symbiotic relationship हम study करने वाले हैं fungi में, lichens and mycorrhiza. So we will study in detail later. So let's see the structure. It, as you know, it is a multicellular eukaryote. इससे पहले दोनों किंगडम जो थे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, सिंगल सेल्ड थे, लेकिन ये मल्टी सेलुलर हैं. ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर क्या होता है, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो फंगस है, फंजाई किंगडम है, इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी द फंगस इनटू 2 कैटेगरीज. वन इज़ फंगस माइसीलियम एंड अदर इज़ द फ्रूटिंग बॉडी. ठीक है, जिसमें हम यीस्ट और मशरूम वगैरह को स्टडी करेंगे. और फंगल माइसीलियम जो होता है ये स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे देन यू विल बी मोर क्लियर. सो हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फंगल mycelium. So first, before knowing about mycelium, first you should know about the term hyphae. What is hyphae? Fungus is made up of tubular filaments known as hyphae. तो जो फंगस होता है, जब आप फंगस को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको उसमें ट्यूबुलर फिलामेंट दिखाई देंगे विच इज़ कॉल्ड हाइफे. तो हाइफे क्या होते हैं, इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, तो ये जो हाइफे हैं, इस तरह के जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, हाइफे. ओके, सिंगल इज हाइफा एंड प्लूरल इज हाइफे. And these branching of hyphae is considered, this total structure is called as mycelium. Means जो हाइफे की ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं माइसीलियम, और जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइफे. अब हाइफे जो होते हैं ये किस तरह से ये मल्टी सेलुलर हो गए, क्यों, एक तो क्या हुआ कि हाइफे जो हैं वो उसके अंदर डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, सेप्टेट और एसेप्टेट, वो अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे. सो लेट्स सी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ फंगल हाइफे एंड फंगल माइसीलियम एंड द कंडीशंस विच आर प्रेजेंट. आइदर दे कंटेन्स मैनी न्यूक्लियाई इन अ सिंगल साइटोप्लाज्म और डिफरेंट cells in the form of with a single nucleus. So let's see the structure in detail of fungal mycelium or fungal hyphae. So here you can see the structure of fungal mycelium, or
You know the tubular structures which are present in the fungus are called hyphae. There can be two conditions in case of hyphae. They can be either aseptate or septate. What does it means? Aseptate or septate? Like this is the tubular hyphae structure I have shown here. This condition will occur when the fungi divide, the hyphae divide. The cytoplasm inside the nucleus will start dividing, but the cytoplasm will not divide. So the condition will come in which a single cytoplasm has so many nuclei, which means the hyphae is multinucleated. So this condition is called aseptate. So this hyphae is called aseptate hyphae, in which the nuclei multinucleated condition is there, but cytoplasm is not further divided. And this condition is called, this nuclei condition is called cenocytic condition or coenocytic condition, which is a multinucleated condition. जहाँ पे भी आपको एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई दिखाई देते हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सीनोसिटिक कंडीशन. ओके. And the second one is the septate hyphae, in which as the nucleus divide, cytoplasm will also divide along with it. Here you can see the different cells. तो एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस है, तो this is a uninucleated condition and such an hyphae is called as septate hyphae. Okay. तो इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है. जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको डिफरेंट सेल्स दिखाई दे रहे हैं विद अ सिंगल न्यूक्लियस इन ईच सेल. सो दिस इज द aseptate hyphae. In the one cytoplasm so many nuclei, and septate hyphae one cytoplasm each cell has single nucleus. And this branch structure of hyphae together is considered as mycelium. जब आप फंजाई को या फंगस को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको इस तरह से एक ब्रांच स्ट्रक्चर दिखाई देता है. इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है ब्रेड मोल्ड. जो ब्रेड के ऊपर ग्रीनिश कलर का लेयर जो फॉर्म हो जाता है, अगर ब्रेड बहुत टाइम तक हम उसको प्रॉपर स्टोरेज नहीं करते हैं, then that is also a fungi. When you will see, observe this structure under microscope, then you will find this branching structure over there. Okay, so this is the structure of the fungal mycelium. Now let's discuss the next part of the fungi kingdom. So next part in kingdom fungi is mode of reproduction. So they show three types of reproduction: asexual, sexual and vegetative reproduction. So we will take up one by one. First let's see the asexual mode of reproduction, which takes place through spore formation. Because you know the fungi, they have, this is a characteristic feature of fungi, that they show asexual mode of reproduction through spore formation. Like for example, normally भी हम क्या होता है, जैसे कि अगर एक we have so many fruits with us, and if one fruit is decomposed or one fruit is spoiled by fungi, अगर उनमें से एक fruit खराब हो जाता है, फंगस लग जाता है उस पर, तो you might have seen that other fruits they also get spoiled very quickly within a few hours. Why is that so? क्योंकि जो फंगस के स्पोर्स होते हैं वो एयर के थ्रू बहुत ईजिली दूसरे फ्रूट्स पे भी चले जाते हैं और उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं. तो फंगस बहुत फास्ट रिप्रोड्यूस करता है थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स. तो बेसिकली देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स फॉर्म्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फंजाई. इन द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट, बट हियर आई विल शो यू द डिफरेंट स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द फंजाई. सो वी हैव zoospores, sporangiosspores and conidia depending upon the different types of fungus. So zoospores, they always formed inside a sac-like structure, and due to this they are protected under this structure, and whenever they found the conditions are favorable, they just break that structure and released out from that structure. So here you can see the zoospores, they are called zoospores because they have the these flagella over their surface which will help them to move these spores. So when they break this structure, the zoospores comes out, they move with the help of this flagella and they move to other places for further reproduction. Second is the sporangiospores. Sporangiospores, their name is given here. The zoo word is for the flagella with the help of which they move, and sporangio word is used for this sac-like structure in which these
spores are being formed. So this sac-like structure is called sporangium. इस sac-like structure को हम क्या बोलते हैं? Sporangium, जो कि जनरली ब्रेड मोल्ड में भी होता है. जो ब्रेड के ऊपर फंगस लगता है वो इस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम. और इसके अंदर क्या होते हैं? स्पोर्स. तो जैसे इनको कंडीशन फेवरेबल मिलती है, ये स्पोरेंजियम को ब्रेक करते हैं और ये स्पोर्स यहाँ से बाहर आ जाते हैं और एयर के थ्रू, विंड के थ्रू, एयर करंट के थ्रू ये दूसरे एरियाज, दूसरे आसपास के जगह पे स्प्रेड हो जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज द कोनिडिया. तो कोनिडिया जो होते हैं इस तरह से, ये एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कोनिडियोफोर बोलते हैं और ये इसके सरफेस के ऊपर इस तरह से गोल सर्कल स्ट्रक्चर, सर्कुलर शेप्स की फॉर्म में कोनिडिया प्रेजेंट होते हैं. और जैसे इनको कंडीशन फेवरेबल मिलती है, ये अपने कोनिडियोफोर से सेपरेट होके जो अपने आसपास के एरियाज है वहाँ पे स्प्रेड हो जाते हैं. सो दिस इज द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फंजाई. नेक्स्ट लेट्स सी द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई. The next part is the sexual mode of reproduction in fungi. As you know, sexual mode will include the two gametes, formation of two gametes and fusion of these gametes. Okay. In fungi, if you will find, there are two conditions, homothallic and heterothallic conditions. In homothallic conditions, the both gametes are from the same type of organism, means genetically same gametes you can say. And in heterothallic conditions, the condition will be there that the two gametes are not genetically similar. Okay, so these are the two conditions in case of fusion of gametes. So this process will include actually three steps. First step is plasmogamy, second step is karyogamy, and third step is the meiosis in zygote. This is first step, this is second step, and this is third step. So first step is plasmogamy, second step is karyogamy, and third step is meiosis in zygote. So it starts with the haploid stage, like the gametes will be formed first. So plasmogamy is the fusion of cytoplasm, karyogamy is the fusion of nuclei, and meiosis in zygote. So I have shown here two gametes, gamete 1 and gamete 2. Okay, so these two gametes, they will fuse with each other for the process of sexual reproduction, because sexual reproduction is the fusion of two gametes or the nuclei of two gametes to form the zygote. This is gamete 1 and this is gamete 2, and these are the nuclei present inside the gametes. When these two gametes fuse with each other, first the fusion of cytoplasm will take place. So the first step is plasmogamy. So this is the first step, that is the fusion of both the gametes, the cytoplasm of both the gametes. अभी यहाँ पे आपने देखा कि न्यूक्लियाई अभी भी फ्यूज नहीं हुए हैं. So there is a stage comes in between which is called as, which is a very unique stage found in the fungi. This is called as dikaryon stage. Dikaryon stage means n plus n, means one haploid nucleus n and second haploid nucleus n. N plus n, this stage is called dikaryon stage, which is found only in fungi. Okay, and this cell is called dikaryotic cell because it has two nuclei, and this phase is called dikaryophase. Karyo word is basically used for nucleus. तो यहाँ पे हम कार्यो वर्ड न्यूक्लियस के लिए यूज करें. डाई इज द कंडीशन इन विच टू न्यूक्लियाई आर देयर, दैट इज व्हाई this cell is called dikaryotic cell, this condition is called dikaryon stage, and this phase is called dikaryophase. Later on, the second step, that is karyogamy, will take place, fusion of the nuclei. So this is the second step, and ultimately the zygote, diploid zygote will be formed. Now third step is, because the fungi, they spread through spores. Their main stage of life is haploid. They are not diploid, they are haploid. So this zygote will undergo meiosis to form haploid spores. Normally क्या होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें, डिफरेंट लाइफ साइकिल्स होते हैं, वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. देन यू विल बी क्लियर कि दिस इज द थर्ड स्टेज. जनरली क्या होता है, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी इज अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म
in which zygote will undergo mitosis. ये पढ़ा आपने, zygote में mitosis होती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, zygote में meiosis हो रही है, क्योंकि इसको क्या करना है, haploid spores बनाने हैं, क्योंकि जो फंजाई की मेन बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, इसलिए इसको यहाँ पे मियोसिस करनी पड़ेगी. सो इज इट क्लियर? फर्स्ट स्टेज इज प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म. Second stage is karyogamy, fusion of nuclei, and third stage is meiosis in zygote to form haploid spores. So this is the sexual mode of reproduction in fungi. Let's see the vegetative mode of reproduction now. So next mode of reproduction in fungi is vegetative mode of reproduction. Vegetative reproduction, you know that, in which the single parent is involved. So we have different processes in fungi: fragmentation, fission, budding, and rhizomorphs. Fragmentation, you know that, you have already studied in class 10 also, that the single fragment will divide into two fragments. The fragmented fungi, when we will do the classification, then you will find the different types of fungi depending upon their structure and all. So this is a single fragment. This fragment will divide into two parts, and each fragment will then form the new organism. Second is fission. Fission means the division of one cell into two. So this is a single cell. It will undergo the division of nucleus as well as then cytoplasm, and will form two daughter cells. Like in vegetative mode of reproduction, the exact copy of the parent organism will be formed. The daughter cells are exactly same as that of the parent cell. Next is budding. Budding is found in yeast. So in yeast, the single organism, these bud-like structures are formed over the surface of the parent organism. These buds, they get separated and will act as a new organism. Next is rhizomorphs. Rhizomorphs are found in those fungi which have the fungal hyphae. So sometimes these hyphae, they may get incorporated into the ground and they act as the roots. Okay, जैसे प्लांट की रूट्स होती हैं, क्योंकि ये फंजाई किंगडम जो है वो प्लांट से जस्ट पहले का है, तो इसके अंदर कुछ फीचर्स प्लांट्स के भी आपको शो होंगे. तो जैसे प्लांट की रूट्स होती हैं, उस तरह से फंगल हाइफे जो है वो अपने आप को किसी भी सबस्ट्रेटम पे, सरफेस पे पूरा अपने आप को मीन्स एनकरेज कर लेते हैं. ठीक है, सबमर्ज कर देते हैं. एंड दे हैव अ टिप surface which is called growing point. So at this tip, the growth of the further fungal rhizomorphs will takes place. So these are the vegetative mode of reproduction in kingdom fungi. Let's now see the classification of kingdom fungi.